Hormone and enzyme deficiency and immunodeficiency. African पिगमाइस अफ्रीकन पिगमाइस में क्या होता है कि नॉर्मल ग्रोथ हार्मोन लेवल बट लैक ऑफ सोमैटोमेडिन सी की डिफिशियंसी होगी, बट ग्रोथ हार्मोन जो है वो नॉर्मल होंगे, दैट इज़ अफ्रीकन पिगमीज. देन अफ्रीकन पिगमीज. देन सूडोकोलिनेस्टेरेज जो है वो प्रोड्यूस होता है बाय लिवर एंड सर्कुलेटिंग इन प्लाज्मा. Pseudocholinesterase is produced by liver and circulate in plasma and deficient in liver failure. Pseudocholinesterase deficiency can be caused by mutation in BCHE gene. The main complication resulting from pseudocholinesterase deficiency is the possibility of respiratory failure secondary to succinylcholine or mevacurium induced neuromuscular paralysis. So the main complication of pseudocholinesterase deficiency is possibility of respiratory failure secondary to succinylcholine or mevacurium induced neuromuscular paralysis. Pseudocholinesterase is produced by liver and circulate in plasma and deficient in liver failure, and the deficiency is by mutation in the BCHE gene. बचे जीन्स BCHE gene, और मेन कॉम्प्लिकेशन इज रेस्पिरेटरी फेलियर सेकेंडरी टू सक्सिनाइलकोलिन और मेवाक्यूरियम इंड्यूस्ड न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस. Myeloperoxidase deficiency. Myeloperoxidase is a human enzyme in eosinophilic granules of neutrophils and in the lysosomes of monocytes. So it's an enzyme in eosinophilic granules of neutrophil and lysosomes of monocytes. If infectious disease occur, it usually fungal infection, particularly Candida albicans, that occurs in those who has diabetes mellitus. So अगर जो है वो माइलोपेरोक्सीडेज डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होंगे, particularly Candida albicans, that occurs in those who also have diabetes mellitus. मतलब किसी को diabetes mellitus प्लस माइलोपेरोक्सीडेज डेफिशिएंसी है तो उसमें फंगल इन्फेक्शन स्पेसिफिकली कैंडिडा अल्बाइकन इन्फेक्शन होगा. इन माइलोपेरोक्सीडेज डेफिशिएंसी विद डायबिटीज मेलाइटिस देयर इज कैंडिडा अल्बाइकन्स. एंड माइलोपेरोक्सीडेज जो है वो एजिडोफिलिक ग्रैन्यूल्स में होते हैं इन न्यूट्रोफिल एंड लाइसोसोम्स ऑफ मोनोसाइट्स. ब्रांच्ड चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी. ब्रांच्ड चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी causes maple syrup urine deficiency by branched chain keto acid dehydrogenase deficiency. Deficiency of aryl sulfatase deficiency. Metachromatic leukodystrophy is the most common leukodystrophy caused by deficiency of aryl sulfatase. Myelin can be degraded and accumulate in lysosome. Myelin cannot be degraded in deficiency of aryl sulfatase and it accumulate in lysosomes. So metachromatic leukodystrophy is the most common leukodystrophy. Metachromatic leukodystrophy is the most common leukodystrophy which is caused by deficiency of aryl sulfatase. Glucose 6-phosphate is absent in muscle. Selective IgA deficiency. Selective IgA deficiency is the most common primary immunodeficiency. Selective IgA deficiency is the most common primary immunodeficiency. It can present with pulmonary infection, GI infection, autoimmune disease. It gives false positive beta HCG test due to presence of heterophile antibody and increase IgA susceptibility to IgA deficiency, increased susceptibility to giardiasis. So when there is selective IgA deficiency, it is the most common primary immunodeficiency. It can present with any infection like GI, immune disease or pulmonary infection. It gives false positive results of beta HCG and due to the presence of heterophile antibody. It increases the susceptibility to giardiasis. Okay. Then X-linked
A gamma globulinemia, A gamma globulinemia, X-linked A gamma globulinemia, and it is X-linked recessive, no B cell maturation. It is X-linked recessive and there is no B cell maturation. Recurrent bacterial infections after 6 months. Decrease maternal IgG. Why? As a result of opsonization defect. X-linked A gamma globulinemia results in its X-linked recessive disease. There is no B cell maturation and recurrent bacterial infections after 6 months, that is जब 6 मंथ्स के बाद बेबी बड़ा हो जाएगा, 6 मंथ्स का हो जाएगा, तो उसके बाद जो है वो रिकरेंट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑप्सनाइजेशन डिफेक्ट. वाई 6 मंथ्स के बाद? क्योंकि यहाँ पर मैटरनल IgG ऑलरेडी जो है वो 6 मंथ्स तक प्रेजेंट होता है, उसके बाद जो वो डेफिशिएंट हो जाता है, तो उसके बाद फिर रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे एज अ रिजल्ट ऑफ ऑप्सनाइजेशन डिफेक्ट. There is decreased immunoglobulin of all types. Skin graft will more successful in A gamma globulinemia. Live vaccine contraindicated in X-linked A gamma globulinemia. Absent or scanty lymph nodes and tonsils. There are scanty and absent lymph node and tonsils in A gamma globulinemia. Skin graft will more successful in A gamma globulinemia. Decreased immunoglobulin of all types, and there is absent and scanty lymph nodes and tonsils. Common variable immunodeficiency. Common variable immunodeficiency में there is a defect in B cell differentiation, so usually present after 2 months and may be considerably delayed. Increased risk of autoimmune disease, bronchiectasis, lymphoma, xenopulmonary infection, and decrease plasma cell and immunoglobulins. So common variable immunodeficiency, there is a defect in B cell differentiation, usually present after 2 months and may be considerably delayed. There is increased risk of autoimmune disease, bronchiectasis, lymphoma, and xenopulmonary infection in common variable immunodeficiency, and there is decreased plasma cells and immunoglobulins. Thymic aplasia. Thymic aplasia or DiGeorge syndrome. DiGeorge syndrome और thymic aplasia होता है when there is a failure to develop third and fourth pharyngeal pouches. Thymus and parathyroid gland fail to develop. Absent thymic shadow on chest X-ray. Failure to develop third and fourth pharyngeal pouches. Thymus and parathyroid gland fail to develop, and there is absent thymic shadow on chest X-ray. It presents with hypocalcemia, results in tetany, T cell deficiency, so there is recurrent viral and fungal infection, and congenital heart and great vessel defect. Thymic aplasia or DiGeorge syndrome due to failure to develop third and fourth pharyngeal pouches. Thymus and parathyroid gland fail to develop. In thymic aplasia or DiGeorge syndrome, there is absent thymic shadow on chest X-ray. It presents with thymic aplasia or DiGeorge syndrome presents with hypoplasia because parathyroid नहीं बना है, तो there is hypocalcemia and which results in tetany. T cell deficiency क्योंकि thymus नहीं मतलब T cell deficiency and which results in recurrent viral and fungal infections and congenital heart and great vessel defect. Chronic granulomatous disease. Chronic granulomatous disease is due to lack of NADPH oxidase. Lack of NADPH oxidase, decreased reactive oxygen species, and absent respiratory burst in neutrophils. Increased susceptibility to catalase positive organisms, Staph aureus, E. coli, and Aspergillus, and abnormal dihydrodamine flow cytometry. Chronic granulomatous disease, there is a lack of NADPH oxidase. NADPH oxidase की deficiency की वजह से क्या होगा कि decreased reactive oxygen species होंगी and there is absent respiratory burst in neutrophil. There is increased susceptibility to catalase positive organism जिसमें Staph aureus, E. coli and Aspergillus है. Abnormal dihydrodamine
flow cytometry test. Abnormal dihydroamine flow cytometry test. Dihydroamine flow cytometry test abnormal होगा. There is increased susceptibility to catalase positive organism like Staph aureus, E. coli and Aspergillus, जो कि लैक ऑफ NADPH ऑक्सीडेज की वजह से हो रहा है. ठीक है, ये कॉज करेगा क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज. जॉब सिंड्रोम, ऑटोसोमल डोमिनेंट हाइपर IgE syndrome is also known as Job syndrome, is a condition that affects several body systems, particularly the immune system. Recurrent infections are common in people with this condition, hyper IgE syndrome. Okay, laboratory techniques in immunology. Laboratory techniques in immunology: direct Coombs test, direct Coombs test detect antibodies bounded to RBC. Indirect Coombs test detect production of anti-RBC antibodies. Direct fluorescent antibody test identifies AG in tissues, antigens in tissues. Direct fluorescent antibody test detects antigen in tissues. ELISA and RIA, extremely sensitive. ELISA is screening test for HIV. Western blot is a confirmatory test for HIV. Western blot is a confirmatory test of HIV. ELISA जो है वो स्क्रीनिंग के लिए करते हैं for HIV, and Western blot is a confirmatory test for HIV. Multiple washing technique is used in ELISA. Flow cytometry analyzes cell population in a complex mixture. Flow cytometry analyzes cell populations in a complex mixture. CD, what is CD? CD of cluster of differentiation, also known as cluster of designation or classification determinant, and often abbreviated as CD, is a protocol used for identification and investigation of cell surface molecules, providing targets for immunophenotyping of cells. So direct Coombs test detect antibodies bounded to RBCs. Indirect Coombs test detect production of anti-RBC antibodies. Direct fluorescent antibody test identifies antigen in tissues. ELISA is extremely sensitive and for screening of HIV, and Western blot is confirmatory test for HIV. Multiple washing techniques is used in ELISA, and the flow cytometry analyzes cell population in a complex mixture. The key points: P-ANCA, if P-ANCA is positive, तो P-ANCA पॉजिटिव होता है श्रग-स्ट्रॉस सिंड्रोम में और अल्सरेटिव कोलाइटिस में. P-ANCA दो चीज़ों में कॉमन, दो में मिलता है हमें, श्रग-स्ट्रॉस सिंड्रोम और अल्सरेटिव कोलाइटिस. ठीक है, सिर्फ दो में मिलेगा P-ANCA, दैट इज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस और श्रग-स्ट्रॉस सिंड्रोम. अनियन स्किनिंग अगर है तो वहाँ पे अनियन स्किनिंग होती है ईविंग सार्कोमा में. अगर ट्यूमर है, कैंसर है, तो ईविंग सार्कोमा होगा. अगर आर्थराइटिस है तो दैट इज़ लाइम आर्थराइटिस, जिसमें अनियन स्किनिंग होती है. प्राइमरी अगर कोलिंजाइटिस हो रहा है तो दैट इज़ प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस, और अगर हाइपरटेंशन है तो दैट वुड बी मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन. ठीक है, अनियन स्किनिंग ईविंग सार्कोमा में, लाइम आर्थराइटिस में, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस में और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में. P-ANCA श्रग-स्ट्रॉस सिंड्रोम में और अल्सरेटिव कोलाइटिस में. ठीक है, सिर्फ दो में. अनियन स्किनिंग ईविंग सार्कोमा में, लाइम आर्थराइटिस में, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस में या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में. समोमा बॉडीज़ में याद रखो PSMM, दैट इज़ P से पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायरॉइड, S फॉर सीरस ट्यूमर ऑफ ओवरी, M फॉर मेनिंजियोमा एंड M फॉर मीजोथेलियोमा. सो P फॉर पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायरॉइड, S फॉर सीरस ट्यूमर ऑफ ओवरी, M for meningioma and M for mesothelioma. Samoma bodies in papillary carcinoma of thyroid, serous tumor of ovary, meningioma and mesothelioma. हर्टल सेल्स मिलेंगे फॉलिकुलर एडिनोमा में, फॉलिकुलर कार्सिनोमा में और हशीमोटो थायरोडाइटिस में. तो
हमारे पास जो थायराइड में क्या होता है, फॉलिकल्स होते हैं, तो फॉलिकुलर हर्टल सेल हमेशा वहाँ मिलेंगे थायराइड की तरफ। तो फॉलिकुलर एडिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा और हशीमोटो थायरोइडाइटिस, फॉलिकुलर एडिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा और हशीमोटो थायरोइडाइटिस, हर्टल सेल्स। Salt and pepper in pheochromocytoma, carcinoid tumor and small cell carcinoma. Pheochromocytoma, carcinoid tumor and small cell carcinoma. Salt and pepper will be in pheochromocytoma, carcinoid tumor and small cell carcinoma. Pheochromocytoma, carcinoid tumor and small cell carcinoma.